এই ডিএনএ বোৰ এটা ডাবল হেলিক্সৰ হয়। আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত আমি পাইছো ক্লাছ 8 পৰা 12 ষ্টুডেন্ট বোৰে এই ডিএনএ যিবোৰ সিকুৱেন্স থাকে এই সিকুৱেন্স বোৰে প্ৰটিন বনায়, প্ৰটিন বোৰে আমাৰ শৰীৰত আহি কাম কৰি থাকে। আৰু সেই ডিএনএ সিকুৱেন্স বোৰত যেতিয়া অলপ প্ৰব্লেম আৰম্ভ হয় তেতিয়া আমাৰ আগত বেমাৰ আজাৰবোৰ হয়। আৰু সেই বেমাৰ আজাৰবোৰ আমি কেনেকে হেৰি কৰো, আমি কৰো যে আমাৰ এক্সপেৰিমেণ্টেল সেটিং আমি যেতিয়া লেবৰেটৰীত টেষ্ট কৰো, আমি আজি কিবা গা বেয়া হলে ডক্টৰে লিখি দিয়ে যে এইটো ব্লাড টেষ্ট কৰিব লাগে, এইটো কৰিব লাগে, এইটো কৰিব লাগে। ব্লাড টেষ্ট বা ইউৰিন টেষ্ট আমি যেতিয়া কৰিব যাওঁ তেতিয়া that itself is a data point. So সেই ডেটা পইণ্টবোৰ গম পালে আমি গম পাওঁ যে এতিয়া মানুহৰ কেঞ্চাৰ হলে মানুহে বায়োপসি কৰে, বায়োপসি কৰিলে আমি জানো যে এই চেল কেইটা মেলিগনেন্ট, যে এতিয়া কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে। এই কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে চেলছ খিনিয়ে কেনেকে হ'ব, তাৰ ডেটা পইণ্ট আছে কি পইণ্টত সেই চেলবোৰ ডাঙৰ হৈছে, কিমান ৰেটত ডাঙৰ হৈছে, কেনেকুৱা, সেইবোৰ যদি আমি জানো আৰু সেই ডেটা পইণ্ট গৈ পেলাই জেনেটিকেলি আমাৰ জিনছ আৰু প্ৰটিনছত কেনেকে এফেক্ট কৰিছে সেই ডেটা পইণ্টবোৰ পালে আমি এটা মলিকুলাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ, আমি যিটো তলত মলিকুলাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি লিখা আছে বাওঁফালে অন দ্য লেফ্ট হেণ্ড সাইড কৰ্নাৰ, that is where we make drugs out of it. So these are all complex system which is happening inside our body, and these are being fed to an algorithm which we have, and then we can predict that whether a particular drug will act on a body, or whether a particular imaging systems or a particular biopsy can become a malignant or non-malignant. So this is one of the main important thing that whole drug the pharmaceutical company is trying to derive out of it. It is in a very nascent stage, but it is easier said than done because it is a multifactorial. Chemical structure biological information these are all multifactorial, impacting different which is impacted by different factors inside the body system. Genetic environmental আজিকালি আমি ধোৱা বাহিৰ ওলাই গলে পলিউশন হয়, হেৰি হয়, সেইবোৰকো আমাৰ শৰীৰত বহুত এফেক্ট কৰে আৰু সেই এফেক্টটোৱে আমাক লাষ্টত এটা ডিজিজ কণ্ডিশ্যনলৈ লৈ যায়। So in drug discovery also AI has a very potential has a big role to play. Big pharma companies are coming up with different AI methods, but hopefully we'll see an AI drug into the market. Plus phase 1 phase 2 choli ase etalage AI enabled or AI discovered drugs duta fail hol, but still people are trying, and hopefully next 10 to 5 to 10 years we might get some AI discovered drugs in the market. Ami tablet to hoyto kinibole pao paro PCB. Go to the next slide. Yeah. So what is the success in drug discovery? আমি জানো যে আমার বহুত হেৰি কৰিছে এটা এই these are some of the very simple examples which people have applied different algorithms to diagnose different diseases. For example, muscular dystrophy, Alzheimer's, আমাৰ যিটো ব্ৰেইনত আমি পাহৰি যোৱা এটা বেমাৰ থাকে Alzheimer's disease বুলি কয়। কোভিডৰ সময়ত বহুতখিনি কৰি they have tried lot of different algorithms for analyzing COVID patients, ovarian cancer, pulmonary cancer, influenza, basically all these things people have been trying to do to identify the cause and the disease progression, and also to predict that whether a person can have a potential disease like cancer or say Alzheimer's in the near future by analyzing the disease data points inside as of today. ল'ৰা জন্ম হলে ফিউচাৰত কি হ'ব পাৰে সেইখিনিও তেওঁলোকে প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰে, কেঞ্চাৰ প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰে, এলজাইমাৰ প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰে, আৰু বহুতো তেনেকুৱা যি ডাউন চিনড্ৰম সেইবোৰ প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰে। So there are a lot of things that is happening in the pharmaceutical industry where we have the AI in disease detection, prediction and modeling. Go to the next slide. Dr. Pukon, আমাৰ টাইমৰ অকমান টাইমৰ পিছুৱাই গৈ আছো। মোৰ আৰু জাষ্ট কেমিষ্ট্ৰি শ্লাইড 4খন আছে হৈ গ'ল। তো কেমিষ্ট্ৰিত যদি আমি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে কেমিষ্ট্ৰি ইজ এ বেঞ্জিন ষ্ট্ৰাকচাৰ। চ' বেঞ্জিন ষ্ট্ৰাকচাৰ নেক্সট শ্লাইড নেক্সট। তো এটা আমি কেমিষ্ট্ৰি ষ্ট্ৰাকচাৰ, আমি কেমিষ্ট্ৰি যেতিয়া স্কুলত পঢ়িছো তেতিয়া হয়তো আমি জানো যে এইটো এটা বেঞ্জিন ষ্ট্ৰাকচাৰ হয়, 6 মেম্বাৰিং। এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি কেমিকেলি এটা হিউমেন ৰিডেবল ফৰ্মত থাকে। এই হিউমেন ৰিডেবল ফৰ্মত কিছুমান ডেছক্ৰিপ্টৰ থাকে, যেনেকুৱা এটম কেইটা আছে, 6টা এটম আছে, ডবল বন্ড 3টা আছে, তেনেকে কিছুমান প্ৰপাৰ্টি থাকে, আমি লগ পি বুলি কওঁ বা ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্স বুলি কওঁ। এই these properties are actually important to build a machine learning model to predict the properties of the molecule and see that whether and how a chemical object really works. Go to the next slide. Yeah. So now if you see this, there is a human readable structure. আমি যেটা কেমিষ্ট্রি এজন প্রফেসরে বা টিচারের স্কুলত আঁকে নোট ড্রয়িং বোর্ডত এটা কেমিক্যাল অবজেক্ট থাকে,
but it has to be converted into a human readable machine. So human to machine readable format. Eta machine ei structure to poribo nore baofale thakato kintu ei binary jitu thake right side etu poribo pare. Etu ami kenake koro etu amar next slide. Just press the button. Yeah, so this can be transformed to a human readable, a machine readable format through what we call it as the machine learning and AI based algorithms. Go to the next slide. And then that machine learning algorithm can also be transported into what we call as the IUPAC name. I mean, IUPAC কথা to শুনিছো International Union of Pure and Applied Chemistry Nomenclature. So hey, from human readable to machine readable and back to IUPAC nomenclature, everything can be done inside the machine using different machine learning algorithms and other tools. Go to the next slide. So if we know this, then what is there is that this machine learning, the chemistry, these are also there are different points. আমি যেগুলো রঙা রঙা দেখিছে এগুলো অক্সিজেন হয়, নীলাবোৰ নাইট্রোজেন হয় আৰু গ্ৰে কালাৰবোৰ কাৰ্বন হয়। এইবোৰ প্ৰত্যেক প্ৰপাৰ্টিবোৰ এটা নিউৰাল নেটৱৰ্কছত দি আমি তাৰ প্ৰপাৰ্টি এইটো বস্তুটো শিকি পেলাই যিটো মনজিতে আগতে কৈছে যে ইট ইজ ইনসাইড দ্য হিউম্যান ব্ৰেইন অৰ মেচিন উই লাৰ্ন machine learns it as we learn in a baby when we are in a baby we are learning a lot of things. So machine learn those things and give you based on those learnings it gives you different outputs. Next slide please. So again our chemical reaction তেনেকুৱাই হয় আমি বাওফালে দেখিছো যে এটা reactant আছে reaction আছে এই বস্তুটো product বনাব হলে বাওফালে তেতিয়ালে আমি কি কৰিব লাগিব based on the information available we can there is a tool which predicts that okay this can be done in this fashion. And finally one of the very important thing that আমি আজি কথা পাতি generative chemistry basically class 11 12 student আছে তেওঁলোকে এটো জানাটো উচিত যে আমি এটা machine learning format smile string বুলি কয় এইটো আমি যেতিয়া এটা neural network দিও it produces new molecules which has different properties a log p tpsa আৰু এই সমগ্ৰ processটোকে আমি এটা generative chemistry বুলি কওঁ the generation of new molecules from the known inference of this and এটা উদাহৰণ স্বৰূপে আমি যদি কৰো yes next please. Yeah, so this is a মাজৰটো আমাৰ এটা molecule হয় আৰু এইবোৰ নতুন using this similar আমি যেটো graph convolutional neural networks আৰু বেলেগ network use কৰি আমি এনেকে নতুন molecule generate কৰিব পাৰো আমাৰ হেৰিত chemistry হেৰিত আৰু finally এই গোটেইখিনি মিলি পেলাই এটা নতুন subject আৰম্ভ হৈছে which we call it as bioinformatics and chemoinformatics in whole drug discovery আমি জানো genes আছে যত DNA আছে protein আছে এই যেটো আমাৰ তলত এটা বলৰ নিচিনা আছে হেতু drug molecule protein or drug মিলি আমাৰ এটা impact হয় আৰু এই drug molecule টো আমাৰ basically আমি lead এটো বেলেগ এটা theory all together এই protein টো যেটা drugs টো যেটা protein ভিতৰত যায় তেতিয়া আমাৰ শৰীৰত আমাৰ যিখিনি বেমাৰ থাকে বেমাৰ ঠিক কৰাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল যে আমাৰ drugs টো এনেকুৱা এটা protein molecule কমাই লৈ blood that it shuts down the activity of that protein or activates the protein and we get our own disease condition rectified. So cutting all these things, thank you. I hope I can reach you up to this. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Pukon. Very insightful. Thank you very much. Our next speaker is Aurobindo Ghosh. Just few words about Aurobindo. Aurobindo Ghosh is a researcher at Max Planck Institute, where he spends his time teaching AI systems to be smarter, safer, and most importantly, not act like villains. Right? So some people have asked question in our question answer forum that how can we be safe? How can we be good in AI? So Aurobindo might be able to answer some of the questions there. And Max Planck Institute, if you all don't know, it's a research institute located in Germany, but it has got branches all over the world. Okay, they carry out basic research in life sciences, natural sciences, and social and human sciences. Right? And Aurobindo is also a co-founder of Axom AI. It's a startup, AI startup, and they're working to make autonomous vehicle better at following traffic rules than most human being could do. Right? And when he is not working, he is busy contemplating whether robots will ever be able to understand that in a chicken biryani, the aloo is the most tasty factor. Yes, Aurobindo, the stage is yours. Yeah, thank you. Thank you so much. There are a lot of discussions and a lot of questions I see about safety, privacy. A lot of people are afraid that AI is going to take jobs or make your life bad. But I always think like this way. When I was a kid, we used to read this. We used to write this paragraph or essay about science is a blessing or a curse.
So this particular fact will always be in our life, that how you use any technology in your life, it can be helpful, it can be a curse as well. So my talk would be focused on three particular applications of AI and the challenges AI is helping us to overcome. The first one is space. So in space, in the left side, you can see there's an accident of SpaceX. Yeah, Ravinder, you can also mix Hindi, Bengali, whatever. Yeah, sure. Because people are different audience we have. Yeah, okay. Yeah, sure. So मैं हिंदी में ही बोलता हूँ. तो ये जो लेफ्ट साइड पे आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, ये एक SpaceX का एक रॉकेट थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था. इसका रीजन बोला गया था स्लॉशिंग. सो स्लॉशिंग एक फेनोमेना होता है जिसमें ये जो मिडिल पे आप लोग जो फोटो देख रहे हैं, ये एक रॉकेट का फोटो है, एक स्पेस क्राफ्ट का फोटो है. जो स्पेस क्राफ्ट में ऊपर में जो चीज रहता है, इसको बोला जाता है पेलोड. तो ये पेलोड में क्या होता है, आपका बहुत सारा टाइप का सेंसर्स रहता है, कम्युनिकेशन एंटेनास रहते हैं. तो हम लोग ये सब स्पेस में भेजते हैं, एंड ये सब जो सेंसर्स एंड एंटेनास है, ये स्पेस में डेटा रिकॉर्ड करके ये हम लोगों का जो अर्थ में है, यहाँ पे डेटा भेजते हैं. एंड वी यूज द डेटा टू डू मोर बेटर वेदर प्रेडिक्शंस एंड जीपीएस लोकेशंस. ये सब चीज हम लोग करते हैं. तो ये जब पेलोड को ऊपर भेजना पड़ता है, ये यहाँ पे एक प्रोपेलेंट टैंक रहता है. ये कुछ नहीं, इस पे लिक्विड रहता है. जो लिक्विड एक टाइप का फ्यूल है, और ये फ्यूल को जला के ये रॉकेट बहुत हाई स्पीड ऊपर जाता है. तो ये जब हाई स्पीड पे ऊपर जाता है, ये लिक्विड बहुत ऑसिलेट करता है. डायरेक्शन है ये चेंज हो सकता है, एंड रॉकेट बर्स्ट भी हो जा सकता है, एंड करोड़ों का घाटा लग जा सकता है. तो ये चीज को साइंटिस्ट ने फिगर आउट किया कि इसको मॉडल करने के लिए हम लोग पेंडुलम्स को यूज कर सकते हैं. AI even space to heavily AI is used. So Arabindo detail kobo paribo mane intent to ki hoy. Can you hear me? I'm so sorry for this. Yeah, sure, sir. Yeah, go ahead. Yeah. So the intent of this inverted pendulum, we use some AI algorithms to keep it in the inverted mode, so that, and we try to replicate these AI algorithms in real life rockets, so that we can send these rockets up in the space and record the data, and हम लोग वो डेटा को रिकॉर्ड करके अर्थ पे भेज सकते हैं कि नहीं. मैं क्या आप लोगों को सुनाई दे रहा है? Yes, Aravindo, we can hear. Yeah, audible. Okay. So तो हम लोग अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जो वीडियो वाले स्लाइड्स पे जा सकते हैं तो हाँ. तो इस पे लेफ्ट साइड पे आप लोगों को एक वीडियो दिखेगा, लेफ्ट एंड राइट. ओके, तो इस पे आप देख सकते हैं कि एक पेंडुलम ऐसे बैलेंस करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और ये कंप्यूटर में कुछ एआई एल्गोरिथम्स चल रहे हैं जो इसको बैलेंस करने का कोशिश कर रहा है, इसको बैलेंस को मेंटेन करने का कोशिश कर रहे हैं. और ये कंप्यूटर में हम लोग कुछ डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो डेटा से हम लोगों को पता चल रहा है कि हम लोग सक्सेसफुल है कि. लेफ्ट साइड पे आप लोगों को ये जो वीडियो चल रहा है, इस पे भी आप लोग देखोगे कि ये जो नीचे जो बेस है, इसका मूवमेंट थोड़ा सा अलग है. लेकिन कंप्यूटर में कुछ डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हम लोग इसको पुश करके भी देख रहे हैं कि ये जो एआई एल्गोरिथम्स है, ये सही में इंटेलिजेंट है कि नहीं, और अगर कुछ डिस्टर्बेंस आता है और कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो इसको बैलेंस कर पा रहा है कि नहीं. And these same AI algorithms we try to mimic in rockets, to balance these rockets and send them into the space. So if we can move on to the next slide. Now my next application is driverless car. आप लोगों को शायद पता है कि अभी बहुत सारे कार आ रहे हैं जिसपे ड्राइवर नहीं रहेगा और जिसपे AI ड्राइव करेगा. तो सिचुएशंस में आप लोगों को ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि रास्ते में आप शायद एक कार लेके जा रहे हो और सामने से आपको दिख रहा है कि एक रोबोट जिसपे ड्राइवर नहीं है, वो कार आपके सामने आ रहा है. द फर्स्ट थिंग एवरीवन विल डू इज पैनिक. तो हम लोगों के लिए चैलेंज है एज अ रिसर्चर, हम लोग ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत हाई है, जहाँ पे एनवायरनमेंट
बहुत चैलेंजिंग है, जहाँ रास्ते में पेडिस्ट्रियंस है, साइक्लिस्ट है, दूसरे टाइप की गाड़ी है, ऐसी जगह पे हम लोग कैसे एक रोबोटिक कार को, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग नहीं है, इसको ड्राइव कर सकते हैं, सेफ ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ एआई एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, जिसके ऊपर रिसर्च अभी भी हो रहा है, इसको कैसे सेफ बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा कि हम लोग जो करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या अचीव किया है और क्या क्या और कर सकते हैं ये फील्ड पे, कैसे एआई एक कार को ड्राइव कर सकता है। तो इसके लिए हम प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट वीडियो है, इस पे ये आप डैश कैम व्यू देख रहे हैं एक कार का। ये कार क्या कर रहा है, ये एक ऑटोनोमस कार है जिसपे ड्राइवर नहीं है और सामने वाला कार पे ड्राइवर है। तो सामने वाला कार को ये कंप्लीटली फॉलो कर रहा है, एंड जब देखा सामने वाला कार, एक इंसान आ गया है सामने, तो सामने वाला कार रुक गया, एंड फॉलोइंग दैट कार आवर autonomous car is also stopping. In the right side video you will see, if we can play the video on the right side. In this video you can see our car is driving, and it's just driving in front of a school. ये एक्चुअली एक मैप सच में एक नीदरलैंड्स का स्कूल के सामने का एक मैप है। इस पे हम लोग जब ड्राइव कर रहे थे, एक बच्चा दौड़ के आ गया सामने। हम लोगों का एआई एल्गोरिथम्स जो कार में रन कर रहा है, ये डिटेक्ट किया कि एक इंसान सामने आ गया है और ये एक हार्ड ब्रेक कर दिया। तो ये दोनों चीज हम लोग एआई से करने का कोशिश कर रहे हैं, और सिमिलर चीज मैं और भी वीडियोस दिखाने चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर जा सकते हैं हम लोग। Now in this video you can see the AI is driving this car, and suddenly a cyclist come in front of it. So हम लोग का ड्राइवरलेस कार है, ये डिटेक्ट किया एक साइक्लिस्ट है और इसके पीछे धीरे धीरे करके ये चल रहे हैं, और ये साइक्लिस्ट को ओवरटेक करने का कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि एक रोड जो दिख रहे हैं ये बहुत नैरो है, आसपास व्हीकल्स है, तो ये साइक्लिस्ट के पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहे हैं। तो एआई ये डिसाइड किया कि सामने एक साइक्लिस्ट है, सो आप हम लोगों को धीरे धीरे जाना चाहिए। एंड इन द राइट साइड ऑफ द वीडियो यू कैन सी, नाउ हम लोग एक ब्लाइंड रहेंगे, हम लोग को साइक्लिस्ट दिखाई नहीं देगा ये ब्लू कार के लिए, बट जब ही एआई को दिखाई देता है कि ये साइक्लिस्ट है, इट gives a hard break. Now हम लोगों का चैलेंज ये है अभी ये सब सॉल्यूशंस पे, कि हम लोग एक ह्यूमन बीइंग अगर यही रास्ते पे ड्राइव करता तो इसको पता रहता कि देयर इज स्कूल, सो आई शुड रिड्यूस माय स्पीड, आई शुड बी वेरी केयरफुल दैट कोई भी सामने जंप कर सकते, बच्चे रैंडमली आ जा सकता है। मगर जब ऑटोनोमस कार है, जब ड्राइवरलेस कार है, कैसे हम लोग ड्राइवरलेस कार को ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कैसे वो नॉलेजेबल बन सकता है, कैसे वो अवेयर बन सकता है, एंड ये सब सिचुएशंस में ऑटोमेटेड सेफ डिसीजंस ले सकते हैं, जिसके लिए हम लोग एक्सीडेंट्स अवॉइड कर सकते हैं। So this is the thing we are working in driverless cars. So if we move into the next slide, my next application is renewable energy sectors in AI. Renewable energy आप लोगों को सबको पता है कि अभी एक हॉट टॉपिक है, आप लोग देखते हो सोलर सेल बहुत सारे जगह पे लगते हुए, wind turbines all over India is growing a lot. Now सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिन्यूएबल एनर्जी में, आप लोगों को भी पता है कि ये एनर्जी इंटरमिटेंट है, मीनिंग सन रात पे नहीं रहता है, विंड हमेशा नहीं चलता है। तो एआई यहाँ पे क्या कर रहा है, एआई एक इंटेलिजेंट एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं हम लोग, जिसके थ्रू हम लोग बैटरीज को चार्ज करते हैं जब सन नहीं रहता है, जब विंड नहीं रहता है, और जब रहता है तब हम लोग बैटरीज को चार्ज कर लेते हैं, एंड जब नहीं रहता है तब बैटरीज डिस्चार्ज करते हैं, पावर सप्लाई करते हैं। तो एआई ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेता है। तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट किए थे सिक्किम में, इफ यू कैन मूव इनटू नेक्स्ट स्लाइड। तो सिक्किम में हम लोग ऐसे पीवी सेल्स लगाए थे ऐसे बाहर, और हम लोग ऐसे बहुत सारे टाइप का सेंसर्स आर्डिनो यूज किए, एंड वी वर ट्राइंग टू रिकॉर्ड द डेटा थ्रू आउट द डे। व्हाट डेटा? To record some voltage and current data from the PV panels, and we used an AI algorithm to we feed this data to an AI algorithm, and then we get some data from the AI algorithm, and we are getting from AI algorithms ये सब डेटा को हम लोग यूज करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो एफिशिएंसी है, ये जो एफिशिएंसी है पीवी मॉड्यूल्स का, ये जो लाइफ साइकिल है पीवी मॉड्यूल्स का, इसको कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर इसको इम्प्रूव कर पाएंगे, ये और
कॉस्ट इफेक्टिव होगा. आप लोगों को शायद पता है जब हम लोग पीवी पैनल्स इंस्टॉल करते हैं बहुत एक्सपेंसिव होता है, बट अगर हम लोग इसको कंटिन्यूअस मॉनिटर करते रहेंगे इसका परफॉर्मेंस, देन वी कैन मेक इट बेटर एंड वी कैन make it more efficient. Now moving on to my last slide. So this slide is very interesting. This is called a trolley problem. If you can search in internet, trolley problem. तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली डिसाइड करता है कि कैसे हम लोग रिस्पॉन्सिबल एआई डिजाइन कर सकते हैं, जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था. तो ये प्रॉब्लम में एक ह्यूमन बीइंग आप लोगों को दिख रहा है, मैं उसके बगल में एक लीवर है. इफ ही पुल्स द लीवर, वो जो ट्रेन है वो 5 लोगों को एक इंसान को मारेगा, और अगर नहीं पुल करते तो 5 लोगों को मारेगा. तो अगर आप वो इंसान के जगह में होगे, आप क्या चूज करो? Probably as a human being, you might say that I will choose to kill one person. But believe it or not, if it's a machine rather than a human being, if it chooses to kill a one person rather than 5%, will you be okay with it? So ये चीज एक Okay, I think Aravinda dropped, right? He got dropped, right? So মই এইখিনিতে এটা কথা কৈছো দেই, এই অলপ আগতে এই সেলফ ড্ৰাইভিং কাৰ কেইখন দেখিলে নে সবে? সো তাত কেনেকে সেইটো কাম কৰে? যে মই অলপ আগতে কৈ গৈছো যে ইনপুট algorithms, input means data, algorithm আৰু output. So গাড়ীখন যেতিয়া ৰাস্তাত চলি থাকিব, গাড়ীখনৰ ওপৰত গাড়ী এখনৰ চাৰিওফালে সেন্সৰ আছে দেই, আৰু যেতিয়া গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট হয় সেই গোটেই সেন্সৰবোৰ, লাইডাৰ, ৰিডাৰ বুলি সেন্সৰ আছে, গুগল মাৰিলে সবে পাবা. এই সেন্সৰবোৰে সাৰাউণ্ডিং এনভাইৰনমেণ্টৰ গোটেই ইনফৰমেশ্যন খিনি কালেক্ট কৰি লয় ইনষ্টেণ্টলি কালেক্ট কৰি পেলাই যিটো এলগৰিথমৰ কথা কৈছো, সেই এলগৰিথমক ডেটাটো দি দিয়ে. যে মানুহে দেখি পায়, গাড়ীখনেতো দেখি নাপায়, মানুহে গাড়ীখনে দেখিব কাৰণে তাত সেন্সৰ লাগিব, আৰু সেই সেন্সৰ নাথিং বাট এগেইন তাতে প্ৰগ্ৰাম আছে সেন্সৰত, ৰাইট? সো বাহিৰৰ যিখিনি এনভাইৰনমেণ্টেল ফেক্টৰ, বোলে ৰাস্তাত লাইন আছে, বাউণ্ডাৰী আছে, ক'ত পানী আছে, ক'ত পথ হোল আছে, গতিকে সেই বস্তুখিনি কালেক্ট কৰি আনে, এলগৰিথমটো প্ৰচেছ কৰে ইনষ্টেণ্টলি, কৰি গাড়ীখনক ইণ্ডিকেট কৰে বোলে এইফালেদি নাযাওঁ, এইফালে যাব লাগিব, আৰু মানুহ এটা আহিছে. চ' এই গোটেই বস্তুটো তাৰমানে ডেটা, ট্ৰেইনিং আৰু এলগৰিথম, সেই গোটেইখিনিক মিলাইহে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ. আৰু তাৰ ভিতৰত কি আছে, এই গোটেই এলগৰিথমটো কি হয়? মেথমেটিক্স. সব মেথমেটিক্স এপ্লাই হয়, গতিকে ডেটাখিনি ইউজ হয়, মেথমেটিক্স প্ৰচেছ কৰে, কৰি ইভেঞ্চুৱেলি কম্পিউটাৰৰ ভিতৰত বিটছ এণ্ড বাইটছে থাকে. চ' কম্পিউটাৰত যেতিয়া সেই প্ৰগ্ৰামবোৰ ভৰাই দিয়া যায়, তেতিয়া মানুহৰ ইণ্টাৰেকশ্যন, মানুহৰ লগত মেচিনটোৰ ইণ্টাৰেকশ্যন হয়, আৰু সেইকাৰণে ইনপুট গৈ প্ৰচেছ কৰি আউটপুট এটা ক্ৰিয়েট হয়. চ' সেইটোৱে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ. I see the Aravindo has joined. Is Aravindo? Okay, so I think this is his last this one slide. So India, right? We will take some questions, Monjita. I can take some questions now. We all can take some questions. Okay. Okay, so there are some questions. I will go through them. There are multiple questions, but I'll just ask few questions which are common or similar. Sorry, I was again lost. I'm very sorry for that. But okay, if you have any questions, I can also answer. Anyway, thank you. Sure. Okay, so question from Pankaj Upadhyay. Can we use AI in language learning? How to motivate our students to learn AI? Yes, absolutely. So মই অসমীয়াত কম নে ইংলিছত কম, দুইটাতে কৈ আছো, ঠিক আছে? So there is already software program বনোৱা আছে, right? এটা ল্যাঙ্গুৱেজৰ পৰা আন এটা ল্যাঙ্গুৱেজ কনভাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে, say you have a document say written in Assamese or Hindi or English,
কম্পিউটাৰত কিছুমান প্ৰগ্ৰাম বনোৱা আছে, কম্পিউটাৰ ভিজন বুলি কয়, ৰাইট? আৰু কম্পিউটাৰ লেংগুৱেজ প্ৰগ্ৰামিং বুলি এটা হেৰি আছে, এটা পেকেজ এটা আছে, যিটোৱেদি যিকোনো ডকুমেণ্ট এটা, যিকোনো লেংগুৱেজ হওক, ৰাইট? মোষ্ট মেজৰ লেংগুৱেজ ইমিডিয়েটলি ফিড কৰি দিব পাৰে। মই এটা ডেমো দেখাব পাৰোঁ, মোৰ তাত আছে এতিয়া। ফিড কৰি দি ইংলিছ টু অসমীয়াত বা ইংলিছ টু হিন্দী, হিন্দী টু ইংলিছ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে, ৰাইট? চ' সেইটো কাৰণে এই ৱেবিনাৰটো পতা হৈছে, যাতে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ দেখাব পাৰোঁ। আজি টাইম যিহেতু লিমিটেড, we cannot actually go up to that level. I would really love to, আমি আৰু কেইবাটা ৱেবিনাৰ যদি পাতো, আমি ডিপ ডাইভ কৰিম বোলে কেনেকে, ৰাইট, নেচাৰেল লেংগুৱেজ প্ৰচেছিং, কাৰেক্ট, কম্পিউটাৰ ভিজন, এলগৰিথমছ, এইবোৰ কেনেকে কাম কৰে। Yeah. So one question from Smita Das: what is the most powerful robot in the world? Anybody knows that question? Most powerful robot? That's a very good question. Yeah. Maybe Aravinda, can you answer that? You're more into more robotics. But actually, it's very tough to answer. Robots has different dimensions, and believe it or not, the most powerful ones are not in public domain. They are used for military purposes. So it's very hard to comment that. Okay, one person wants to know about the concept of Neuralink and nanobot. Anybody knows about Neuralink and nanobot? Maybe. মই বহুত বেছি মাষ্টাৰ কৰা নাই এইটো সাবজেক্টত, তো নেনো টেকনলজি আছে, ৰাইট? Just like quantum computing. So nano technology আজিকালি nanobots ওলাইছে, and those nanobots actually can work up to the cell level in human body. মানুহৰ বডিত মানে cell levelলৈকে কাম কৰে, কিন্তু মই ইমান মাষ্টাৰ কৰা নাই এইটো এৰিয়া। Another question from Sachin Kanu. My question is how AI may change the shape of school education in the coming future, and how students in the remote area can learn more about it. Yes, that's an excellent question, right? Yep. So coming in next few years, I can guarantee you curated learning. Suppose itia ami yat kiman student ase, so studentor skill set বা intelligence একে নহয়, বা সব student they don't like a traditional way of very generic learning, right? So teacher এজনে যেতিয়া একেই পদ্ধতিৰে সব ষ্টুডেণ্টক শিকাই থাকে, so তেতিয়া কিছুমান ষ্টুডেণ্ট স্মাৰ্ট ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰব্লেম নাই, কিছুমান ষ্টুডেণ্ট এভাৰেজ থাকে, কিছুমান হেৰি থাকে। So the recommended curated learning is going to come, right? Our education system, some of the things is going to change dramatically is this. Say, etia student ejonok jodi koy bole essay ekhon likhibo lage, right? So essay ekhon jodi likhibo lage, bahut student e ji jane ChatGPT ase etia, ChatGPT query korle write an essay about animal, right? Within instantly in few seconds essay ekhon likhi dibo ChatGPT, correct? So তেনেকুৱা কিছুমান আমি কন্ট্ৰল আনিব লাগিব স্কুলত, ৰাইট? যিবোৰ ট্ৰেডিশনেল শিক্ষাৰ পদ্ধতি আছে আমাৰ স্কুলবোৰত, সেইবোৰ আমি অকমান চেঞ্জ কৰিব লাগিব। আমি এছেখন হোমৱৰ্ক হিচাপে নিদি আমি ৰিয়েল টাইম এছেখন লিখিম, ৰিয়েল টাইম লিখাও এছেখন, ৰাইট? চ' আৰু টেকনলজি ওলাইছে এতিয়া বহুত স্কুলত কি হৈছে, বেছিভাগ সেই AI টিউটৰ্ছ ইনষ্টল কৰিছে। AI টিউটৰ্ছ কিহৰ কাৰণে ইনষ্টল কৰিছে স্কুলত, এতিয়া ইয়াতে ইউএছৰ বহুত কেইখন স্কুলত আছে মই জানো। চ' তাত কি হয় বোলে ষ্টুডেণ্ট এজনৰ পঢ়া লিখা পদ্ধতিটো চবৰে বেলেগ বেলেগ হয়, গতিকে যদি AI টিউটৰতে এনি টাইম যদি এনচাৰ কৰিব পাৰে কিবা এটা প্ৰব্লেম, ৰাইট? চ' কেনেকে এনচাৰ কৰিব, ষ্টুডেণ্ট এজনটো ইংলিছ নাজানিব পাৰে, অসমীয়া নাজানিব পাৰে, হিন্দী নাজানিব পাৰে, কোনোবাই ইংলিছ জানে, কোনোবাই হিন্দী জানে, কোনোবাই অসমীয়া জানে, ৰাইট? চ' এতিয়া যিহেতু আমাৰ এই নেচাৰেল লেংগুৱেজ প্ৰচেছিংটো ওলাইছে, তো যিকোনো ষ্টুডেণ্ট এজনে জাষ্ট ক'ব নাজানিলেও, জাষ্ট ক'ব যদি নাজানে, জাষ্ট টাচ ইট, ৰাইট ইট, ৰাইট? ক'ব যদি জানে, মই যদি ক'ব জানো, মই অসমীয়াত ক'লো, কৈ পেলাই
computer to buji pabo bole it will translate into English, and then it's going to help you. Correct? Aru kisuman tools and technique ase very productive. Ami moi hei bostupor Ahomor schoolot dekhabo mon ase jodi ami next webinar koribo paro. Hei tool bore ki kore teacher or efficiency borai dibo. Jeneke bole quiz eta create koribo lage ba kiba eta document create koribo lage ba teacher or kiba eta document already ase that kisuman question convert koribo le beleg eta. So iman dunia tool very modernized ulaise AI world. Hey bostupor jodi ami schoolot anibo paro schoolor efficiency teacher the teacher grading kori time to spend korar kono jukti na thake to. So teacher should be productively use their time so that student can learn a lot of things from the teacher. So it is unending question, open ended. So I answered some of it. Hope it helps. Yeah, sure. Our next question from Ranjit Sharma. This is more for like drug discovery. His question is, in drug discovery and genomic sequence, do you use DL, LSTM, CNN enhanced with transformer, encoder and decoder algorithm, and do you use Gen AI? Implementation for this use case, if yes, what kind of model have been used? Yes, people are using all those things. Basically, whatever you have mentioned, DL, LL, these are, we know, we use it knowingly or unknowingly, but yes, in genomic sequence and even in yes, in biology, we don't use the generative case because we not want to generate something. But what we do in analytics, we use all those things because, for example, genomics in basically in pharmacogenomics or in metabolics and all those stuff. There are a lot of data is there, and those patterns, which Manjit have told already, that these are nothing but pattern recognition and then analyzing those patterns and giving you the output. So all these algorithms are being used in different cases in different as per the problem definition. So if we can have a defined problem, then based on the problem definition, we use different algorithms to come out with our as use cases and for achieving our main objective in drug discovery. And generative one, as I showed you in my last, I think one slide, the generative chemistry, to generate new molecules out of known molecules, to get a new intellectual property and patentable molecule, which will be much more, which might give you a more predictability of a better drug than the future, that we use in the generative chemistry as such. Nice. And we use DL, LSTMs, all those models we use here. Okay, wonderful. We'll take one more question, Monjita. I think keeping in mind that we have really, it's quite late for many of us. So one question from Tilok Setri is asking, how is AI expected to impact the job market in India? If all work is done by AI, will unemployment be affected? Itu bostui next slide right? So that's a very good question as well. Everybody asks these questions. Nothing unusual, correct? So AI is going to replace a lot of jobs for sure. Suppose more of a slide here, right? The fastest growing slide just slide more copy World Economic Forum. There was a recently correct? On the left hand side, here, top fastest growing jobs, big data specialists, fintech engineers, AI machine learning, software application developers, security management. On the right hand side, some of the jobs are declining dramatically. Postal service clerks. Here, there is nothing to worry. And not in technology, it is always going to be there. Kintu, what needs to be worry is the traditional way of learning things has to be changed. Here, ami zibor schoolot hiki aso tia Ahomor nisina schoolot. Heibor ami jodi mok jodi hude bole ejon professor ekhon book likhise, right? Aro hei book khon pori moi 100 paise. That doesn't make me any better person and to be able to compete in today's global economy. It is going to be very difficult. Here, you need to make sure that you prepare for the skill sets that you need. Azir jugor amar ki skill set ase.
এই স্লাইডখনত যদি চাই 4 স্কিল সেট analytical thinking, resilience, flexibility, agility, leadership, creative thinking, right? Motivation, self-awareness, technology literacy. All of these skills are in huge demand. So the student or আজি অসমৰ নিচিনা জেগাত hard skill to থাকে student, right? বোলে আমি বহুত পঢ়িব লাগে 10 ঘন্টা 12 ঘন্টা পঢ়িব লাগে 100 ভিতৰত 100 স্কোৰ কৰিব লাগে. That's not the right way. How to manage the time 24 hours পৰে কিন্তু 24 hour to কেনেকে manage কৰিব লাগে কি পঢ়িব লাগে strategy to কি, right? What kind of skill is needed in the market next 5 to 10 years of মানুহে realize কৰে আমি এতিয়া AI project বনাই আছো, we are executing a project every day. So আজি 5 বছৰ আগতে যিমান কেইটা মানুহ লাগিছিলে আমাক ডেভেলপ কৰিবলৈ এতিয়া we don't even need 50%, we need less than that. আৰু সেইটো বস্তু only 3% industry implement হৈছে পৃথিৱীত এতিয়া এই artificial intelligence to not even it's going to take some time কিন্তু it is coming যে এটা সময়ত artificial intelligence everywhere লাগিব, right? আৰু মই যেটো কৈছো বলে artificial intelligence যদিও লাগে it's rocket science not mathematics গতিকে আমি যদি এই বস্তুবোৰ এই core skill setত যদি আমি গুৰুত্ব দিওঁ তেতিয়া we don't have to worry about replacing job, but we should definitely worry about reskilling our skill sets for the students and also for the labor workforce. Right. I think this is also similar kind of question by from Sainik School Golpara Cadet Al Suhail Islam. He also had a similar question about career and all. I think the same answer will suffice him. Yeah. Okay. So one more question maybe. Siranjip Datta. I'm Siranjip Datta from Lakhimpur. My question is, can we implement AI in every car on the road of the world for every accidents caused by accidental reason? How much time need for this type of revolution in road safety? Basically, he wants to understand, can AI be implemented in all the cars and minimize accidents, and how much time it will take? Yes. Yes, Aurobindo. Go ahead, Aurobindo. I think in US they already are trying to implement it, and Tesla is pushing that. And yes, if everything is AI, probably the accidents will go down. This is the objective. This is called Vision Zero, no accidents. But how much time will it take? It depends on the country. India, it would take a little more time than in US. But of course, in US, I believe that within the next 10 years, they will definitely have more autonomous cars than more human-driven car. So মই এটা statistics add কৰি দিছো ইয়াতে. So recently, Tesla, they got approval in China, right? So US or statistics mote US government or eta statistics ulaisile. Aro according to US government policy, 10 billion miles of driving experience laibo self-driving car, right? So self-driving car or level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 or gas. Level 5 or driverless, that driver nathake complete, right? So level 5 power kane 10 billion miles experience laibo hey company to aru kior kane 10 billion miles experience lag because to avoid accident. Every condition on the road the car has to understand, means all these patterns that exist. আজি আমাৰ last week 6 feet 6 inches snow পৰিছে, everything is covered with snow. কেনেকৈ গাড়ী এখনে বুজি পাব বোলে ইয়াত snow আছে, ইয়াত পানী আছে, কিবা আছে. So many different circumstances, environment factor, right? এই গোটেইখিনি বস্তু গাড়ী এখনে বুজিবলৈ সময় লাগিব। সেইটো কাৰণে এতিয়ালৈকে level 5 accidentless লোৱা নাই, কিন্তু not too far কেইবছৰতে ৰাস্তাত আহি আছে। Wonderful. Okay. Monjita, should we take more questions or? Yeah, so I think we covered pretty much everything, and I had some tools that we wanted to cover, but we don't have time today, right? Yeah. Those tools are really productive tools for students and teachers as well, but we can have another session sometime, right? So we can take questions if
You guys have patience. I can sit here for hours. Okay, one question from Sachin Kanu. His question is, how can AI be extensively used to reduce crime all over the world? Yes. So, anyone wants to answer that question? I already typed in an answer. We can use it in forensic science for crime analysis, facial recognition, evidence identification. It's already been used in some of the countries. Yes. There are multiple techniques of finding out crimes, right? Say, for example, fraud detection, bank fraud, right? So, fraud detection, another technology that you can be did, right? Aro biometric identification, right? There are so many different ways. Azikali ki hoy মানুহ এজনক দেখিলে তাৰমানে কিছুমান characteristics find out কৰিব পাৰে আৰু authentication authorization directly automatically এইটো biometric authentication আছে যে বহুত কোম্পানীত ওলাইছে গতিকে making significant progress on that as well. Okay. Okay, I think these are the major questions. Let's see if there are more. Okay, somebody. So I want to bring into attention few things, right? This webinar came to life with some of the very intellectuals, and not only intellectuals. I have to mention all the names, right? Otherwise, it's not going to happen, right? We have been talking this, right, for a long time. And here, to special mention, we have Northeast India Scientific and Entrepreneurial Diaspora. I would call brainchild of Dr. Paramananda Saikia. It is a non-profit professional scientific forum, right? And that forum is actually composed of, it's a network, I'm also there, network of scientists, thought leaders, industry experts, scholars, students. And for the very first time, NAIST has hosted a webinar conference, Biomanufacturing Summit Conference in Guwahati. So for the first time in Northeast, that kind of innovative conference has been hosted. So we have been working to, Parama, Ananda and me have been talking this for years now. We live pretty close by here in Boston. And he has been instrumental in discussing all of this. And of course, we have Nayan here as well. Then we have Mriganka joined, Paul is there, Samir is already there, right? And Sanjeev Hazarika is there. So all these people has been immensely contributed. Of course, I have to thank to Vanilla Sharma as well, who has been fantastic and supporting on the flyer and all, right? So few things I want to cover before I hand it over to Utpal. So we have, this is not the end for all, once for all end, right? What we do in addition to this kind of webinar, right? As part of Next Gen Kids, we are starting another real AI development projects. Just from February 1st, already 39 candidates, student has enrolled as of yesterday, all over various schools, right? Interested. These are all free of cost. My passion is how I can bring this awareness into nook and corner of Assam. That's my passion right now. So if you are interested, you can join us as well, right? And we'll plan for next webinar as well. And we're also planning for an on-site conference in Assam, Guwahati, sometime end of this year. So stay tuned for that. So I hand it over to you, Paul. If you have any questions. Thank you so much. Yeah, I think we should, we have a few questions, but I think we can end it today, and we can probably answer also through the chat. We can do that. And, and did you share any email ID? I think, I saw Nayan had shared email ID. I believe you also would have some email ID in your presentation.
Yeah, no, we have our website. You can go to our website as well. Then Facebook, WhatsApp. People can communicate. There are so many different communication channels. Sure, we'll share all the information so that people can ask questions to us through WhatsApp or other medium as well. We would really love to hear feedback from you. I know this is pretty generic, webinar. If you can send us your feedback, we can curate it. We can have a curated webinar next time. Sure. Okay. Yeah. So I'd like to thank all of you, all the panelists. First of all, let me extend my heartfelt gratitude to Dr. Ranoj Pegu, his Honorable Minister of Education, then Suranjana Senapati, Director of Elementary Education Department, and Dr. Pojul Loing, OSD to the Education Minister Assam, for their profound interest and timely collaboration with schools across the state. We are really grateful, very thankful to all of you for having so many people come over to this webinar. A special thanks to all the participating schools, teachers, and students who made this webinar truly impactful. Okay, we really love the questions that you have asked. We also deeply appreciate Vanilla Sharma for beautifully designing the webinar flyer, adding creative touch to our efforts. Finally, our sincerest thanks to all the AI planning team, Dr. Paramanda Soikia, Mriganko Gogoi, Assistant Professor, Don Bosco University, and esteemed speakers of this webinar who have worked tirelessly over the past months to bring this vision into life. Okay. Your dedication and commitment have been the driving force behind this successful event. Thank you so much again. Really, to India, have a very good day, have a very good weekend. To US, good night, and please be safe. Thank you. Ponjita, any last word from your side? Thank you. I really appreciate everybody, all the schools, right? And we should not end here. We should continue this journey so that we can really have a good impact, right? Across the states, north, east to west. So I'll be looking forward to have this kind of webinar and work with all of you so that if it is really beneficial for you, just contact us anytime. We can have the next one as well. Sorry, Manjit. Instead of you people thanking here, we should thank you. Thank you, Dr. Fugon. Nayan wanted to say something. I saw him coming. For this new initiative and staying that late in your, I think it's already 1 o'clock might be at your place, so 12:31, so 12 o'clock I think, yeah. Yes, yeah.